Hi, hello. Welcome back to my YouTube channel. I am Chidanand, a final year BMS student. In previous class, we studied Avaleha Kalpana in Kalpana Nirmana 2. Today, we are going to discuss about Sneha Kalpana. Sneha Kalpana. Sneha means fat or fatty acids. Fat or fatty acids. And Kalpana means the pharmaceutical procedure. Pharmaceutical procedure of to prepare the medicaments. To prepare the medicaments. That is Sneha Kalpana. स्नेह कल्पना का एम क्या है? What are the aims of the Sneha Kalpana? Why Sneha Kalpana are required? We study that to extract fat soluble active principles. फैट सोल्यूबल एक्टिव प्रिंसिपल्स को क्या करना चाहिए? एक्सट्रैक्ट करना चाहिए. किससे? द्रव्य के अंदर क्या होता है ना, फैट सोल्यूबल एक्टिव प्रिंसिपल्स होता है, वो एक्सट्रैक्ट करने के लिए स्नेह कल्पना को हम पढ़ना चाहिए. और टू मेक यूज ऑफ थेरापेटिक वैल्यूज ऑफ तैला एंड घृता. तैला एंड घृता आर more qualities of therapeutic values are present. To use that's why Sneha Kalpana is said. To enhance self life को क्या है? बढ़ाना चाहिए, इसलिए स्नेहा preparations are said. Drug absorption and more palatability. It increases more palatability as well as drug absorption. That's why these are aims of Sneha Kalpana. These are aims of Sneha Kalpana. Now we discuss definition of the Sneha Kalpana. Definition of the Sneha Kalpana. It is a pharmaceutical process. It is a pharmaceutical process to prepare medicaments. To prepare medicaments by combination of kalka dravya, sneha dravya, drava dravya in the specific proportion and sequences. These are the, what they said, these are the medicaments by combination of sneha dravya, kalka dravya and drava dravya. कैसे? स्पेसिफिक रेशियो एंड सीक्वेंसेस. स्पेसिफिक रेशियो और सीक्वेंस में लेके इसको क्या बनाते हैं? हम स्नेह कल्पना को बनाते हैं. कैसे बनाते हैं? बाय सब्जेक्टिंग टू ए यूनिक हीटिंग पैटर्न. By subjecting to a unique heating pattern and parameters according to need of therapeutics. According to need of therapeutics, that is called as Sneha Kalpana. That is called as Sneha Kalpana. Now we discuss what are the essential ingredients are required to prepare Sneha Kalpana. Acharya Sharangadara said that कल्का चतुर्गुणीकृत्य घृतं वा तैलमेव वा चतुर्गुणे द्रवे साध्यं तस्य मात्रा फलोन्मिता. These are ingredients and their quantities are said by the Acharya Sharangadara. Ingredients and their quantity. Kalka dravya, sneha dravya and drava dravya. Kalka dravya, sneha dravya and drava dravya are said 1:4:16. 1 part, 4 part and 16 part. It is to be taken in the ratio of 1:4:16 because kalka chaturguni krutya. Kalka dravya is taken as 4 parts to that of sneha dravya. 4. Here essential ingredients are mentioned in Sneha Kalpana are kalka dravya, sneha dravya and drava dravya. Kalka dravya is taken as 1 part, sneha dravya is taken as 4 part, 4:4:16 part it is taken as drava dravya. These are essential ingredients and their quantity. Now we discuss general method of preparation of Sneha Kalpana. General method of preparation of Sneha Kalpana. It
We prepare Sneha Kalpanas in two paces. पहले पेज में क्या करते हैं, स्नेह मूर्छना इज डन. फर्स्ट पेज you can do the sneha murchana, and in second page you do the sneha kalpana. Sneha murchana and sneha kalpana, these are two pages of general method of preparation of sneha kalpana. Sneha murchana, sneha murchana, it is a unique procedure carried out on uncooked sneha before subjecting it to sneha kalpana. स्नेह कल्पन से पहले, स्नेह कल्पन से पहले कौन सा प्रोसीजर है ना, उसको क्या कहते हैं हम, स्नेह मूर्छना कहते हैं. स्नेह मूर्छना इज डन ऑन अनकुक्ड स्नेहा, नॉट कुक्ड स्नेहा, इट इज डन ऑन अनकुक्ड स्नेहा. किस लिए करते हैं स्नेह मूर्छना, किस लिए करते हैं, ये अभी हम पढ़ेंगे. तैल मीन्स स्नेह मूर्छन के लिए एग्जांपल्स कौन सा, घृतम मूर्छना एंड तैल मूर्छना. घृतम मूर्छना एंड तैल मूर्छना आर एग्जांपल्स फॉर स्नेह मूर्छना. ओके, किस लिए करते हैं यार, देखो, टू रिमूव आमदोष एज वेल एज दौर्गंधता ऑफ द स्नेह. कुछ तो इम्प्यूरिटीज एंड टू रिमूव द बैड स्मेल ऑफ द स्नेह द्रव्यस, to remove bad smell and impurity from that's why sneha murchana is to be done. It imparts color to the oil, as well as the potency of the sneha is improved. देखो यार, पहले मीन्स स्नेह कल्पना से पहले स्नेह मूर्छन को क्यों करते हैं बोले तो, इट रिमूव्स आमादोष एज वेल एज इट रिमूव्स दौर्गंध, द बैड order of the sneha, as well as it increases the color of the oil, and also it increases the potency of the preparation. That's why sneha murchana is to be done. Okay, now we discuss general method of sneha paka preparation. Four line shloka must and should you have to by heart. This one and this one. Okay, and this one. आदौ सम्मूर्छयेत् स्नेहं क्वातं संचारयेत् ततः दुग्धं कल्कं क्रमात् दद्यात् गंधद्रव्यं ततः परम. आदौ सम्मूर्छयेत् स्नेहम, बिफोर प्रिपेयरिंग द स्नेह कल्पना यू हैव टू डू द स्नेह मूर्छना. आदौ पहले क्या करना चाहिए हमको, सम्मूर्छयेत् स्नेहम, सम्मूर्छयेत् स्नेहम, बिफोर प्रिपेयरिंग द स्नेह कल्पना यू हैव टू डू द स्नेह मूर्छना. फर्स्ट स्नेह मूर्छना इज टू बी डन. लेटर क्वातम संचारयेत ततः, पहले क्या किया हमने, स्नेह मूर्छना किया. टेक दिस मूर्छित स्नेह इन स्नेह पात्र एंड हीटेड ओवर मंदाग्नि. टू दिस मूर्छित स्नेह यार्ड क्वाता कषाय एंड हीटिंग इज कंटिन्यूड ऑन. यहाँ पे क्या बताया, पहले स्नेह मूर्छना करो, उसके बाद क्या करेंगे, क्वातम संचारयेत्. टू दैट मूर्छित स्नेह यू हैव टू ऐड द क्वाता आर कषाय मेंशन्ड इन द प्रिपरेशन. लेटर दुग्धम कल्कम क्रमात् दद्यात्. To that you add dugdha and kalka dravya one after the other. एक के बाद एक को क्या करना चाहिए, दुग्ध और कल्क द्रव्य को ऐड करना चाहिए. ओके, लेटर गंध द्रव्य आर एडेड एट द एंड. गंध द्रव्यम ततः परम, गंध द्रव्य आर एडेड एट द एंड. ओके, एवं रीत्या मंदानलेन नैव पचेत भिषक्.
सब हमने क्या किया, अभी मिक्स्ड किया है ना. Throughout the process, the contents are to be mixed. Throughout the process, content are to be mixed repeatedly with ladle to avoid sticking up content to the vessel. कंटिन्यूस क्या करना है, स्टिर करना है, किससे, लैडल से, क्योंकि वो चिपकना नहीं चाहिए, इसलिए क्या करना चाहिए, लैडल से मिक्स्ड करना चाहिए. स्नेह पाक is carried out slowly, मंदाना लेना, carefully over मंदाग्नि till स्नेह सिद्धि लक्षणस are seen. कब तक करना चाहिए ये, कब तक करना चाहिए, until the siddhi lakshanas are seen. At that time too you have to prepare the sneha paka. Later you allow it to self cooling, and after that you have to filter it and stored in glass containers. This is the general method of sneha preparation. First you have to do sneha murchana, later you have to do sneha kalpana. Okay, now we discuss sneha siddhi lakshana. The preparations of sneha kalpana are properly prepared or not, it is assessed by sneha siddhi lakshana. They are वर्तिवत् स्नेहकल्कः स्यात् अंगुल्या विमर्दितः, शब्दहीनो अग्निनिक्षिप्तः, स्नेहः सिद्धो भवेत् तदा, यदा पेनोद्गमस्तैले पेन शान्तिश्च सर्पिषि, गंध वर्ण रसोत्पत्तिः स्नेह सिद्धिस्तथा भवेत्. These are siddhi lakshanas of sneha preparations. First line says that vartiva sneha kalkah syat angulya vimarditah. When you take the preparations in between your fingers and rolled it, then it should be varti, it should be formed. When you taken between your fingers and made into varti form, it should be converted into varti form. That is properly prepared sneha kalpana. And shabdahino agni nikshiptah snehah siddho bhavet tada. When some part of the preparations you sprinkled above the fire, there is no crackling sound, then it is properly prepared sneha. Yada penodgamasthaile, pena udgama, proth formation in taila preparations, and pena shantischa sarpishi, in ghee preparation, there is disappearance of proth. Pena udgamasthaile, in taila preparations the proth is the formation of proth, and in ghee preparations there is disappear of the proth formation. Okay, and the final product having gandha varna and rasa of the desired, what we desired na, that smell, taste, rasa, that is called as properly prepared sneha preparation. Okay, now we discuss sneha paka heating stages. There are 3 stages are said. How many stages? 3 stages. मृदु पाक, मध्यम पाक, and katina paka. स्नेहः पाकस्त्रिधा प्रोक्तो मृदुर्मध्य करस्तथा. There are 3 stages of sneha paka. They are mrudu sneha paka, madhya sneha paka, and kara sneha paka. ईशत सरस कल्कस्तु स्नेह पाके मृदुर भवेत. Sarasa, it having the preparation, at the end product of the preparation having
more watery part, sarasa. Sarasa means more watery part, that is called as mrudupaka, that is called as mrudupaka. मध्यपाकश्च सिद्धिश्च कल्के निरस कोमलः. Madhyapaka is free from watery content, it is free from watery content, nirasa, and it is soft to touch, komala, it is soft to touch. And katina ishat katina kalkascha sneha pake bhavet tada. The final preparation is very hard, very hard, katina kalka, that is called as katina sneha paka. There are three sneha paka are mentioned: mrudu paka, madhyama paka, and katina paka. Okay, now indications of snehapaka, indications of snehapaka according to different acharyas mentioned different indications. Okay, acharya Sharangadara mentioned mrudupaka is used for nasha, mrudupaka is used for nasha, and madhyama paka is used for sarva karma. For all the procedures you use the madhyama paka, and for karapaka it you can use in abhyanga massage. According to charaka, mrudu paka can be used in nasya, madhyama paka used in pana and basti, and karapaka is it is used in abhyanga. According to shishruta, mrudu paka is used in pana, madhyama paka is used in nasya and basti, and karapaka is used in abhyanga. These are indications of snehapaka according to different acharyas. It may ask for MCQ questions, remember. Okay, kala maryada means time duration to prepare the sneha preparation. टाइम ड्यूरेशन कितना टाइम लगता है ना, ओ क्षीर प्रिपरेशन है तो 2 नाइट्स लगता है बनाने में, स्वरस का है तो 3 नाइट्स, तक्र अरनाला गोमूत्र का प्रिपरेशन है तो 5 नाइट्स लगता है, मूला एंड लता का है तो 12 डेज लगता है, बृहद धान्य एंड मौसा रस का प्रिपरेशन है तो 1 डे लगता है. ओके, दीज आर काल मर्यादा फॉर डिफरेंट स्नेहपाक MCQ. Here MCQ may be asked. Okay, now we discuss MOA. MOA means method of administration along with Ushna Jala as Anupana. Ushna Jala as Anupana. एंड मात्रा डोसेज फॉर्म कितना बनाया था पहले ही हम पढ़ लिया था, मीन्स कल का चतुर्गुणे कृत्य वो श्लोक है ना, उसमें हमने चारंगधर ने बोल दिया था 1 पला यूज करते हैं. स्नेहपाका डोसेज इज 1 पला, अनुपाना इज उष्ण जला लूक वार्म वाटर, लूक वार्म वाटर. Shelf life, if Ghruta preparations 2 years you can be stored, and Taila preparation you can store up to 3 years. Example for Sneha Kalpana they are Kshira Bala Taila and Palagruta. Kshira Bala Taila and Palagruta, these are examples for Sneha Kalpana. Okay, we discuss examples in next class. This is all about Sneha Kalpana in detail. If you have any doubts comment below. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर लो. फॉलो फॉर मोर आयुर्वेदा कंटेंट एंड फॉर हैंड रिटन नोट्स ज्वाइन माय टेलीग्राम, लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन. थैंक यू.